Let's start with the exercise 5b, relative atomic mass, relative molecular mass and mole concept. This is very simple exercise. Just you need to be more attentive while reading the question, understand what is asked and what is given to you. I'll be discussing some formulas here, then we'll start with the questions. First is to find the number of moles. Beta mole, what is mole, what are relative atomic mass, molecular mass, everything definitions will be discussed in the class. Now the number of moles. Now it has three formulas. Suppose mass is given to you and moles have been asked to you. Then you have to, what you have to do is to divide the given mass with its molecular mass. You remember it is molecular mass, not atomic mass here. Whether atomic mass is given to you, you have to divide it by molecular mass. Then is given number of atoms or molecules divided by 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms or molecules. Then given volume upon 22.4 liters. All these will give you the value of the number of moles. Again, suppose if the volume is given to you in decimeter cube, but here we have the expression for liters, so we need to know how the units related to each other. 1 liter is equals to 1 decimeter cube is equals to 1000 centimeter cube is equals to 1000 ml. That is 1 ml is equals to 1 centimeter cube and 1 liter is equals to 1 decimeter cube. Second formula which is important is 1 gram molecular mass. Beta 1 gram molecular mass means the molecular mass in grams is equals to 1 mole of that substance is equals to 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of that substance is equals to 22.4 liters of gas at STP. Means all four are equal to each other. Sometimes the question may be asked to you relating this two or this and this or these two. Means question can be asked relating any two out of them. It means 1 mole is equals to the molecular mass of that thing. Suppose if I ask you nitrogen atomic mass is 14, but molecular mass is, because it is N2, so 14 into 2 is 28. It means 1 mole of nitrogen has how much mass? That is 28 gram. And 1 mole of nitrogen has how many molecules? 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules. And 1 mole of nitrogen has how much volume? That is 22.4 liters gas. Then one more thing I can say is 28 gram of nitrogen has 22.4 liters of gas, because 28 gram is your molecular mass and molecular mass is also equal to the volume, that is 22.4 liters of gas. I guess explanation is very clear to everyone. Now we'll start with the questions. Question 10th, it was asked in ICSE 2017. The mass of 5.6 liters of a certain gas at STP is 12 gram. 5.6 liters गैस का मास हमें गिवन है 12 ग्राम. आपको फाइंड करना है उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास. अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास चाहिए, लेकिन मेरे पास 5.6 लीटर्स का है, मुझे पता है अगर मुझे 22.4 लीटर्स का जितना मास आएगा वो मेरा कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा. लेकिन मेरे पास 5.6 लीटर्स का है, तो मैं कोशिश करूंगा 5.6 की हेल्प से मैं 22.4 लीटर्स का मास पता करूँ. So mass of 5.6 liters of gas at STP is 12 gram. तो यूनिटरी मेथड 1 लीटर का कितना होगा? 1 कैसे बनेगा? 5.6 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 5.6 से क्या करेंगे? डिवाइड. तो 22.4 लीटर्स का मास कितना होगा? 1 को 22.4 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई करके. सो हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट एंड बाय सॉल्विंग इट यू विल गेट द आंसर 48 ग्राम्स. तो मोलर मास कितना होगा उसका? 48 ग्राम. सेकेंड पार्ट वॉज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP बाई 2 मोल्स ऑफ SO2. हमें पता है 1 मोल के अंदर वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर्स. इन्होंने कितनी पूछी है? 2 मोल्स. तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP बाई 1 मोल इज 22.4. तो बाई 2 मोल्स कितना हो जाएगा? 1 से 2 कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करके. तो इधर भी 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. दैट इज 44.8 लीटर्स. नेक्स्ट question number 14th. This was asked in ICSE 2017 and 2019. Calculate the number of oxygen atoms in 0.10 mole of Na2CO3.10H2O. Now remember bache, in Na2CO3.10H2O, first let us count how many atoms of oxygen are present. O3 means 3 atoms here, and see here in front of O there is 10 also. So 10 oxygen atoms are here and 3 are here. So total they are 13 atoms of oxygen. Now we know that 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules
Everybody knows that it is equals to 1 mole. So can you say these many molecules or 1 mole? Because 1 molecule contains 13 atoms. अगर मैं 1 से 6.022 इंटू 10⁻23 लिखूंगा तो 1 से ये कैसे बनेगा जब इतने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. रिमेंबर दिस थिंग. सी बच्चे 1 था, 1 से अगर मुझे ये बना रहा हूं मैं तो ये कैसे बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस चीज से. अब हमें पता है ये चीज और किसके इक्वल होती है, 1 मोल के इक्वल भी होती है. अब 1 मोल के अंदर इतने एटम्स हैं तो 0.10 मोल के अंदर कितने होंगे, तो 0.10 कैसे आएगा, जब 1 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हम 0.10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस आंसर. देन इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम. नाउ वी नो दैट, रिमेंबर बच्चे 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. ओके, नाउ सो 23 ग्राम सोडियम अगर मैं बात करूं तो उसका जो एटॉमिक मास है इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम. तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 ग्राम. तो 23 ग्राम में कितने ग्राम एटम्स हुए, 1 हुआ. इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? कहते जितना उसका एटॉमिक मास होगा ना उतने ही ग्राम एटम्स होंगे. अब 23 ग्राम सोडियम है, उसका 3 ग्राम एटॉमिक मास है, तो इसमें कितने ग्राम एटम्स आए, 1 आया. तो अब यूनिटरी मेथड 1 ग्राम सोडियम में कितना आएगा, 23 को 1 कैसे बनाएंगे, 23 से डिवाइड करके, तो इधर भी 23 से डिवाइड. हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 4.6 ग्राम सोडियम. तो 4.6 ग्राम में कितना होगा, 1 को 4.6 बनाने के लिए 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 4.6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एंड यू विल गेट द आंसर 0.2 ग्राम एटम्स. नेक्स्ट इज मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास कितना है, 12 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास बच्चे कितना होता है उसका, 32 ग्राम. एटॉमिक मास 16 होता है, मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम. ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट 0.28 मोल्स.